Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Beyond Borders featuring Gangubai Kathiawadi. Assalamu alaikum, Amna. Ji, Walaikum Assalam, Hassan. I would like to correct you. Okay. This is Beyond Borders featuring Gangubai Kathiawadi 1. I will also talk about the currently ongoing K-drama series Extraordinary Attorney Woo. Very good. And I will also touch upon American series Virgin River, जिसकी मैंने 2 episodes पहले जिक्र किया था और बहुत लोगों ने लिखा कि why haven't you elaborated? But very briefly, I will talk about both of them. How do you want to start? Whichever way you want. So let's start with Gangubai. Let's start with Gangubai. I just finished watching Gangubai. Yes, I know that. Yes, Amna, you take the lead on this one. So I watched Gangubai when it came out. Okay. And पहले तो वो obviously यहाँ पे इंडियन फिल्म्स लगती नहीं हैं हमारे सिनेमाज में, तो मेरे कुछ जियाले से दोस्त हैं बहुत ही एंथू और ईमो किस्म के फॉर बॉलीवुड, तो उन्होंने कहा चलो चलो दुबई चलते हैं गंगूबाई देखने। मैंने कहा ये ना होगा, क्योंकि दुबई का टिकट जो है वो 50,000 से 2.25 लाख पे चला गया था उस वक्त। तो मैंने कहा नहीं, वी कांट गो टू दुबई। तो उनमें से 2 अदर दोस्त मेरे ऑलरेडी जा रहे थे दुबई। तो 2 दोस्त क्या, एक सादिक है जो ऑलरेडी दुबई में रहता है और दूसरा नोमी है जो जा रहा था। तो हमने एक ग्रुप बनाया, गंगू बॉयज़ या पता नहीं क्या, कि हम ये 3 लोग हैं जो गंगूबाई इकट्ठे देखेंगे। खैर वो यहाँ ना हम देख सके, उन दोनों ने वहाँ देख लिया 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा। फिर मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मैं देखूँ ही ना। फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ा इधर उधर की सोर्सेज से और फिर अल्टीमेटली लेकिन वो फिर नेटफ्लिक्स पे भी आ गई, तो मैं फिर दोबारा मैंने देखा। तो ये थी गंगूबाई की मेरी गंगूबाई की दास्तान। ओके, ये तो ठीक है। आपने कैसे देखी? जी, जब आपने देखी तो ये अच्छी नहीं थी स्टोरी मेरी, मजे की थी, लेकिन मुझे लगा कि अब आप इलैबोरेट करेंगे। जब आपने देखी तो आपके एहसास क्या थे, आप उनके बारे में? बात ये है कि जैसा कि RRR में भी मैंने बोला था और अब दोबारा बोल देती हूँ, फॉर मी सिनेमा इज फैंटेसी, इट्स सपोज टू टेक यू टू अनदर वर्ल्ड एंड गंगूबाई डिड दैट। मतलब है ऑब्वियसली बहुत रियल स्टोरी है। माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, हुसैन जैदी ने लिखी किताब, उसमें गंगूबाई वाज वन ऑफ द चैप्टर्स एंड द कैरेक्टर्स, so it's real, it's not entirely fictional. But the world that Sanjay Leela Bhansali creates, and that set that he created, and those songs that he created, it just takes you to another realm altogether. For me, that is what cinema does. So I really enjoyed it, and I wish that मैं उन दोनों के साथ दुबई चली गई होती देखने बड़ी स्क्रीन पे, because it was a film meant for the big screen. अच्छा, अब इसमें ना मैंने जब देखी तो 2 पॉइंट ऑफ व्यूज एस्टैब्लिश हुए देखने के बाद। पॉइंट्स ऑफ व्यू जी, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू एस्टैब्लिश हुए। पॉइंट ऑफ व्यूज सॉरी, पॉइंट ऑफ व्यू पुरानी आदत है एज एन एडिटर। पॉइंट्स ऑफ व्यू, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, हाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू एस्टैब्लिश हुए। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ऑब्वियसली जब आप एक फिल्म देखते हैं और फिल्म की टेक्निकलिटीज, परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, स्टोरी, नैरेटिव, वो सारी चीज़ें आप देखते हैं। मेरे लिए आई थिंक जो मुझे लगा कि जो गंगूबाई काथियावाड़ी की जो सक्सेस है वो जो इमोशनल कनेक्ट व्यूवर, मुझे नहीं पता कि और व्यूवर्स ने वो एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, बट मैंने वो जो इमोशनल कनेक्ट उसके साथ महसूस किया ना, वो उसकी बड़ी जबरदस्त एक बात है। बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन नॉट डायरेक्टली रिलेट टू गंगूबाई, राइट? वो जो एक तो ऑब्वियसली आई एम नॉट अ वुमन, सो इन पर्टिकुलर द challenges, the many challenges that women around the world face on a daily basis. On top of all of that, prostitution, and even there's a dialogue in it. We also know that prostitution is the oldest profession. उसके ऊपर वो फिल्म इतनी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए बनाना कि वो आपको ओवर द टॉप एग्जैजरेटेड भी कहीं ना लगे, ऐसा भी ना लगे कि आपने इसको ट्रिविलाइज कर दिया है। बिल्कुल ऐसे जैसे कील के ऊपर आप ठक करके हथौड़ी मारते हैं और वो मैसेज आपका वहां से इधर कन्वे हो जाए। ये बड़ा जो है, ऑफ कोर्स हम हमेशा ये बात करते हैं कि बेशक टेक्निकली फिल्म बहुत साउंड हो,
बेशक उसकी स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी ज़बरदस्त हों, उसके सेट भी ज़बरदस्त हों, परफॉर्मेंसेस भी ज़बरदस्त हों, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल पे एक इमोशनल कनेक्ट ना बने आपका कैरेक्टर्स के साथ या स्टोरी के साथ, फिल्म फ्लॉप हो जाती है। सो गंगूबाई की बहुत बड़ी विक्ट्री ये है कि आप गंगू के साथ रोते हैं, आप गंगू के साथ हंसते हैं, एंड देयर आर सो मेनी मोमेंट्स इन द फिल्म व्हेन I wept. And of course, you're so connected to that character. I mean, when Kamli dies, you cry. When she's sold to the brothel, you cry. The first time she's pimped out, you're broken. When Kamli, her friend, dies and she's dying with her, you feel that. Then when she's abused, violently abused, you feel that. But then there are moments of small victories as well, and you feel okay, if a woman can come out of such dire situation, then any woman can come out of any situation. You just need to find that strength inside you. And No, she's not come out of that situation. She's made made that yeah, situation yeah. worth living. That's what, it's the same thing. No, it's not. It's the same thing. She was still, I mean, there's a dialogue when she says that 15 साल हो गए मैं यहाँ से बाहर नहीं निकली, और अब मैं जब जा रही हूँ तो मैं सीधा प्रधानमंत्री के पास जा रही हूँ, उनके ऑफिस जा रही हूँ. For me, that's coming out of it. For me, to survive that situation is to come out of the misery that you've been given. कि ये लो भी तुम्हारी ये situation है. I think she was still miserable. It's not that she was entirely happy, but at least she finds solace in that cage. वो जो पूरा जो जगह है वो भी तो एक cage She found a purpose. She found a purpose. She found a purpose for it, and empowering the entire colony of prostitutes, and finding rights for them, or to appeal to the government कि आप लीगलाइज करें प्रोस्टिट्यूशन को. वो नहीं हुई अभी तक, ऑफ कोर्स वो नहीं होगी, मगर देन टू फाइट फॉर देयर राइट टू एन एजुकेशन और देयर राइट टू हेल्थ सर्विसेज, ऑल ऑफ दैट वर पर्पसेस दैट शी फाउंड, एंड शी मेड हर लाइफ वर्थ लिविंग. तो कभी भी आपको ये नहीं आता ख्याल बीच में कि गंगू वांट्स टू एंड हर लाइफ, कि वो किस हालात में पहुंच गई है, इवन व्हेन शी इज एट हर वर्स्ट. एंड देन ऑफ कोर्स शी फाइंड्स करीम लाला. So she finds ways to get out of the misery. पहले ही जब वो जो उसका पहला इंसिडेंट होता है where she has to service a client, उसके बाद वो जैसे वो नोट को आग लगाती है जी, और वो किरदार बदल जाता है. आप जब देख रहे होते हैं, आपको देखते हुए अंदाजा हो जाता है ये अब गंगा नहीं है, ये अब गंगू है. और इसमें ऑब्वियसली जहाँ पे संजय लीला बंसाली का बहुत क्रेडिट है, उन्होंने डायरेक्ट किया है. आई थिंक आलिया भट्ट इज जस्ट लाइक phenomenal actor. Spectacular. मुझे याद है जब इसका ट्रेलर आया था, मैंने भी देखा था, तो मैंने कहा ये क्या आलिया भट्ट इस तरह के रोल में तो नहीं अच्छी लग रही है, क्या है मतलब ये क्या हो गया आलिया भट्ट को. उस वक्त मुझे नहीं था पता संजय लीला बंसाली ने डायरेक्ट कहाँ इश्क वाला लव, और मैंने ये क्या राधा नाचेगी, और कहाँ माय गॉड हाउ शी इज डिलीवर्ड यार. ये तो अब देख के लगता है कि यार ये आलिया के अलावा कौन करता है ये रोल. So I feel that Alia is one of the finest performers that's come out of Bollywood in the last like 10 years. For sure. मेरी reservation थी आलिया के साथ, because I felt कि जहाँ एक इतना grimy और gruesome subject है, Alia lent a kind of a whitewash and a glamour to it. Because she's this beautiful Gangubai in an ocean of really, really distressed women. I mean, starting from Sheila Masi to Razia Bai to every sex worker around her, they're all really run down. They're not glamorous, and they haven't been glamorized. मगर बीच में से एक सफ़ेद साड़ी में जो गंगूबाई थी, वो obviously, but that is Sanjay Leela Bansali's way of spinning the camera, कि वो magic जो है वो देता है अपनी leading ladies को, characters को. नहीं तो अब इसकी फ्लिप साइड ये है कि अगर वो ये ना होती जो वो थी, तो फिर वो सब अचीव भी ना करती जो सब उसने अचीव किया है. Exactly. So obviously she stood out because she was different. Yeah. And she was different, which is why she stood out. तो अगर वो उसी जो झुंड है उसमें वो डिसॉल्व हो जाती, बिल्कुल, तो फिर उसकी इंडिविजुअलिटी भी तो ना होती. Absolutely. तो वो उसकी जो इंडिविजुअलिटी थी, that shown. And through different, I mean, so who was your favorite character other than? I like that boy, Razak. Yeah. I think the entire the sequences between Gangu and Razak, they were
वेल एग्जीक्यूटेड, दे वर एंजॉयबल। और जो एक रोमांटिक एलिमेंट आप गंगू की जिंदगी में, वो भी काफी बिटर स्वीट था। बिटर स्वीट था, लेकिन मुझे वो किरदार पसंद आया, यू नो, अ मेल कैरेक्टर फाइनली, जो कि एक अच्छा वो था। फैजी भाई भी बहुत क्यूट था। फैजी भाई भी क्यूट था, वो भी मुझे अच्छा लगा, बट वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। I like both of them. I also liked Kareem Lala. So I'm glad that there were a couple of men in her life who were not exploitative. करीम लाला के बारे में पता नहीं क्यों आई थॉट दैट मे बी अजय देवगन की जगह शायद कोई और अगर होता तो। नहीं, I thought he fit it very well. He did obviously अजय देवगन is a very good actor. No, I thought but मुझे पता नहीं, मुझे हुआ कि यार कोई और होता तो फिर अच्छा लगता। Actually नहीं, I really liked. I think he played it to the T. Kareem Lala. Played it really well. It's just my ठीक है, no, I liked him in it. I like these little cameos that Ajay Devgn was doing in different films, you know. RRR में भी थे, नई उसमें सिम्बा में भी थे, इसमें सिम्बा में थे ना? सिम्बा में आई थिंक मैंने देखी नहीं मुझे ख्याल आता है, बट वो यूनिवर्स है रोहित शेट्टी का, मे बी थे, शायद होगा उसमें। मेरे ख्याल में अक्षय कुमार और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट यहाँ भी उनका जो एक्सटेंडेड कैमियो था, आई फाउंड इट वेरी प्लेजेंट। एक तो इट्स ऑलवेज नाइस टू नो दैट यू गॉट समबडीज गॉट योर बैक, तो बड़ी ब्रेव थी कि वो गई। वो सीन हाँ मुझे बहुत पसंद आया, जब वो पठान को वो ढस करके उसका सर फाड़ता है, वो अच्छा सीन था, बहुत अच्छा सीन था। और फिर वो खड़ी होके उसके ऊपर यार आप दुनिया देखें जो बनाई है, उसकी लाइटिंग देखें, आपको वाकई लगता है आप ट्रांसपोर्ट हो गए हैं टू द 50s and 60s। मैंने इसकी थोड़ी सी मेकिंग देखी, वो पड़ी भी है नेटफ्लिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो जो सेट बना है उसकी एक एक चीज। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली, संजय लीला भंसाली हैज एक्चुअली लिव्ड अराउंड दैट एरिया। कमाथीपुरा जो है उसके आउटस्कर्ट्स में, उसकी मतलब लेन्स के आसपास he's actually lived there. So he says that he spent a good like 30 years of his life in that area. So this whole narrative, this story comes from a place of like, you know, from his heart, straight from his heart, because he's actually lived those moments. And he says वो जो लेन जो क्रिएट की थी, वो जो एक मेन कमाथीपुरा की लेन है, he's like that's the actual lane जिसमें मेरी सुबह स्कूल की जो बस थी वो जाती थी, और जब मैं वापस आता था स्कूल से तो वहीं से मैं गुजर के आता था। सो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व एंड अब्सॉर्ब जो वहाँ पे हो रहा होता था, जो उनकी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो बात करते थे, जो अगर जिस तरह से वो ल्योर करते थे क्लाइंट्स को, नहीं आता था तो जिस तरह से वो गालियां देते थे। सो यू नो द फैक्ट दैट that was interesting, and at the same time inspiring also. He is that man who's come from that background, you know, he said that we were a lower middle class family. तो वो पानी भी नीचे ऐसे करके बाल्टी को करके फिर रस्सी से खींच के, but from there to here where he's actually built that world for cinema and for the entire world to see. ये बात मुझे आपने बहुत अच्छी लगती है। फिल्म मेकर्स वो जो हम बात करते हैं अक्सर रिप्रेजेंटेशन की, ये वो लोग जो असल में खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके आते हैं सिनेमा में और मनवाते हैं। अब द फैक्ट दैट ही इज गुजराती, ही इज गॉट गुजराती बैकग्राउंड, हर फिल्म में आप देखें, हम दिल दे चुके सनम से लेके अब तक, यू नो, कोई वो गुजराती के एलिमेंट होता है। नवरात्रि पे या वो गरबा काठियावाड़ी जो एरिया है वो काठियावाड़ी जो है नाउ नोन एज गुजरात, बट फॉर्मली काठियावाड़ी वो है ही, वो रीजन ही वो है। सो वो जो यार ओपनिंग सीन आलिया भट्ट का, जब वो गंगा आती है, गंगा दैन, और वो जो उसका पूरा वो गरबा होता है, गरबा कहते हैं ना, गरबा जो उसने वो जो परफॉर्मेंस है यार, I was like, wow यार, जितनी, और वो वन शॉट था, वन टेक था, आपको लग रहा है एक, आई थिंक बीच में एक कट आया, बट मोस्ट ऑफ इट वाज लाइक वन शॉट। एंड लाइक, यू नो, उनकी कोऑर्डिनेशन आप डांसेस की देखें, उनकी मेहनत देखें, सब डांसर्स की, इंक्लूडिंग आलिया भट्ट, केयर के मतलब नॉन स्टॉप द डांस। अच्छा, द म्यूजिक डिडंट रियली डू इट फॉर मी। आई रियली लाइक द फर्स्ट वन। नहीं, I and the background music also unintentionally I was constantly comparing it to Deepika Padukone's गरबाज, you know, जो हमने देखे हैं उनकी और फिल्मों में, वो बेशक वो रामलीला हो या बाकी उनकी जो संजय लीला बंसाली के साथ फिल्में हैं, I felt that magnitude was much bigger and these were smaller songs in comparison. I know I'm being unfair. ये गली में सेट था, I'm being unfair, I know. वो I know. But अब अच्छा, ये और फिर इन मिडवे एक और गरबे का सीन है, जब वो सेलिब्रेशन नवरात्रि कहती है कि अब हम मनाएंगे, आफ्टर आई थिंक शी बिकम्स प्रेसिडेंट, और उसके वो भी अगेन, और वो देखिए आपके जिस तरह वो
टूट के नाचती है हाँ. और नाचने के बाद टूट जाती है फिर. And I saw her interview and she said that that was such a difficult take because she was exhausted that day and she wasn't feeling well. और आखिरी वक्त तक उसका ये था मैं ये कैसे करूँगी. But then she did it. I mean, and wow, and how. संजय लीला भंसाली करवा रहा था Exactly. चीजें. Yeah. But that was splendid. और फिर बिल्कुल जो आखिरी सीन है वो मेरा पूरी फिल्म का सबसे फेवरेट सीन है जब वो प्राइम मिनिस्टर से मिलके आती है और उसको वो जो रिसीव करते हैं कमाथीपुरा में जो सारे उसको और वो चीज वो ट्रक के ऊपर से जब वो गुजर रही है लेन में से और सब उसके ऊपर वो फेंक रहे हैं चीजें. Although I have to say that Razia Bai कुछ जल्दी threw in the towel. I didn't expect कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी. वो एंड में रज़िया बाई भी उसको प्रणाम करती है तो मतलब है कि लेकिन काफी टाइम हुआ हमें क्या पता कि ओवरऑल 15 साल की कहानी है. मुझे लगा कि रज़िया भाई का शायद नहीं इतनी जल्दी या कभी भी मुझे लगा the kind of person she was. I don't know. नहीं बट fascinating character though. देखे ना उस मोहल्ले की एक औरत प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच गई. Of course. तो वो रज़िया और भाई ये ट्रू है जो एक्चुअल गंगूबाई थी वो did meet नेहरू sometime between 47 and मतलब वो 40s 50s में 50s और 60s में ये फिल्म सेट है 50s 60s में और उन्होंने बड़ा पीछे वो फिल्मों के पोस्टर्स से जो है वो उसको टाइम जोन उन्होंने अपने तरफ से करने की कोशिश की है. अटेंशन टू डिटेल तो खत्म है बिल्कुल फिल्म पे. बट हम ना अब एक बात सवाल का आप मुझे जवाब दें. जी. हम पाकिस्तान में जब मैं कोई ये मैं जब इस तरह की कोई बात करता हूँ आई जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन. इस तरह कोई मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर रहा था किसी चीज़ के ऊपर. पर जब हम ड्रामे देखते हैं तो हम बड़ा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि एक सर्टन चीज़ को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, एक सर्टन चीज़ को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ग्लैमराइज किया जा रहा है. यहाँ पे द एंटायर फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड प्रोस्टिट्यूशन. आपको लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन को ग्लोरीफाई ग्लैमराइज किया जाए? आपको लगा किसी जगह पे that you want to be a prostitute? No. Not at all. Not for a second. You constantly empathize with them. You feel their misery. Even through the glamour and the songs and the sets and the larger than life performances, you feel the misery. That's really good cinema. कि आपके emotions कभी भी confused नहीं होते कि आप देख क्या रहे हैं. You are watching the story of a woman who led a miserable life. Who was betrayed by her lover and actual husband. रियल लाइफ में तो वो शादी करते हैं और फिर वो बेचता है उसको शादी के कुछ देर बाद. यहाँ पे वो डायरेक्टली आके डंप कर देता है यहाँ पे. बट 1000 रुपए के लिए ये 17-18-year-old girl 16-year-old coming from such a protected household and ending up here and not being able to go back home or even contact her parents. And then when she does contact her parents, she finds out that her father's died and her mother doesn't want anything to do with her. It's heartbreaking. Not in any scene do you see, and never do you glorify the profession or the people who are pimping her out or the negativity. What is the difference here? क्या वजह है कि जब हम गंगूबाई treatment है. It's the way it's treated. कि एक तरफ वो आपको एहसास जरूर दिला जाती है फिल्म कि यार कि चले अच्छी बात है कि अब इस तरह के मोहल्ले नहीं है, बेहतरी आ गई है. जैसे हमें पता है हीरा मंडी में लाहौर में ऐसी कितनी कहानियां हुई होंगी. जी बिल्कुल जरूर हुई होंगी. बट आपको एहसास दिला देती है यार कि इस तरह खवातीन के साथ क्या क्या उन्होंने अगेन. आपने पूछा कि what sets it apart? Intention. The intention of the filmmaker sets it apart. The intention of the filmmaker here, first the writer Hussain Zaidi to write that book, and then Sanjay Leela Bhansali, his intention to make the film was to tell Gangubai's story and to reveal it to the world and to give her that credit and make her immortal, to immortalize that one character and the misery that she went through. The purpose was not to make something that would sell. Ratings, views, box office. It's incomparable, really. So the intention, I think, of the filmmaker is what sets it apart. सही. Bottom line. So bottom line is कि जो फिल्म मेकर या ड्रामा मेकर होता है उसको उस कहानी के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है. Absolutely. Not to the numbers and not to the box office. उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आप कहानी के साथ कभी देखिए कितनी कहानियां हैं दुनिया में, करोड़ों कहानियां हैं. हर बंदा हर कहानी तो नहीं बना सकता. आप वही कहानी बताएंगे लोगों को जो जिससे आप कनेक्ट करेंगे. अदरवाइज आप नहीं बता सकते. So you have to be sincere to your cause, to your medium, and the medium is filmmaking. The cause is whatever is close to you. Sanjay Leela Bhansali also, I think,
that he'd written it 7-8 years ago. He said he'd been thinking and making like pre-production 7-8 years से शुरू हुई थी. तो ये he actually said he wanted to make it before Ram Leela. हाँ. And he said he was waiting for Alia to grow up enough to be cast as Gangubai. Actually, I think that's not a true story because apparently I think he'd signed Priyanka Chopra. अच्छा? हाँ. Priyanka Chopra, I think, was meant to do this film. और आलिया भट्ट actually sign हुई थी for a film called Inshallah. Yes, जो कि हुई नहीं. जो कि I think सलमान खान was also a part of that. जी, जो कि shelf हो गई. वो shelf हो गई, वो हुई नहीं. और ये हो गया. और बड़ी एक मजे की स्टोरी सुनाई संजय लीला भंसाली ने that he met Alia when she was 9 years old. Yeah. And she'd come to audition for Black for the little girl's role. And he said कि no, I can't cast her in that role. I want her to be a proper heroine when she does. वो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि उस वक्त रणबीर कपूर was assisting him in Black. तो कहता है कि मैंने आलिया भट्ट को रणबीर कपूर के साथ बिठाया और मैंने बोला कि put your head on his shoulder. And she was obviously shy, she didn't do it. But by the time I looked at her mother and I was like, क्यों मतलब like, you know, this is acting. So she actually put her head on Ranbir's shoulder when she was 9. Cute. And he said, I took a picture and I sent it. I had that picture, I sent it to Alia last week also. तो destiny यार, 9 साल की बच्ची उस वक्त how did she know कि मतलब इसी बंदे किस्मत connection. बड़ी interesting वो story है. गंगूबाई काथियावाड़ी Netflix पे है. अगर आप लोगों ने फॉर सम रीज़न अभी तक नहीं देखी, देखें, क्योंकि आमना मुझे लगता है कि इस फिल्म को देखना ज़रूरी इसलिए है पर्टिकुलरली हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे प्लेटफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ड्रामों के ऊपर बात कर रहे होते हैं जो कि ख़वातीन की प्लाइट के ऊपर बेस्ड होते हैं. हम विमेन एम्पावरमेंट की, स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की बहुत बात करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बात करते हैं सर्वाइवर्स की और फाइटर्स की. तो विक्टिम नहीं, सर्वाइवर. आई थिंक वो इस ये फिल्म गंगूबाई काथियावाड़ी उस चीज़ को बेहतरीन तरीके के साथ एक्सप्रेस करती है. और वो एक्सपीरियंस करना कि एक, मैं आमना ये भी सोच रहा था कि नॉट ऑल स्टोरीज और नॉट ऑल लाइव्स और पीपल हैव हैप्पी endings, right? Most don't actually. Most don't, right? Why are we such suckers for like happy endings? Because most people don't have it. That's why we're suckers for it. How many people get a fairy tale? Nobody. Actually, nobody gets a fairy tale. There is no walking. No, but Alhamdulillah, not most people also don't go through. हाँ, sure. वो misery का भी वो spectrum हर किस्म की stories है ना हसन. हर किस्म की कहानियाँ हैं. बात वही है कि कोई कहानी कौन सी बता रहा है और कैसे बता रहा है. मतलब एक सेकंड के लिए आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को इमेजिन करें कि एक लड़की 16 साल की उम्र में वो सोल्ड टू बी अ प्रोस्टिट्यूट एंड शी मेक्स पीस विद इट एंड शी सेज कि अच्छा मुझे अगर इसमें धकेल दिया गया है तो मैं अपने आप को भी एम्पावर करूंगी और ना सिर्फ अपने आप को एम्पावर करूंगी, अपने इर्द गिर्द जितनी खवातीन उन सबको एम्पावर करूंगी. And it's a true story. Yeah. It's not even fictional. Exactly. I mean, think about it. तो इसीलिए फेरी टेल एंडिंग नहीं मिलती ना उसको. नहीं मतलब वो फिल्म स्टार बनने, वो बढ़िया एंड में अच्छा वो एक डायलॉग है क्या, आई फिल्म स्टार बननी थी बट जो फिल्म स्टार होती है उसका तो पोस्टर उतर जाता है. वो पूछते हैं और गंगूबाई का जो माँ का नाम तो बताती है, गंगूबाई कहती बाप का नाम, कहती कि माँ का नाम काफी नहीं है. अच्छा लिखे देवानंद. क्यूट. बहुत जबरदस्त फिल्म है यार. वो इसलिए नहीं कि टेक्निकली स्पीकिंग आई थिंक ऑब्वियसली संजय लीला भंसाली की एक्सपर्टीज को तो दुनिया मानती है. तो कैमरा वर्क हो या चाहे वो उसके फ्रेम्स हो, सेट्स हो, परफॉर्मेंसेस, आलिया भट्ट के अलावा विजय राज एज रजिया भाई, जो सारे आई हैव टू मेंशन शीला बाई जो है ना, शीला बाई परफॉर्म बाय, मुझे नाम नहीं उनका याद बट वो भी सीमा भावा. हाँ. Oh my God, what a figure. What a character. आपको देख के झुरझुरी होती है कि oh my God, आपकी अगर किस्मत इस औरत के हाथ में हो धज्जियां उड़ा देगी और उड़ाती भी है. ओह. तो परफॉर्मेंसेस, टेक्निकल एस्पेक्ट सब मतलब A1 जबरदस्त. बट बियॉन्ड दैट इसका जो इस फिल्म का जो सोल है वो इसकी कहानी है. और वो कहानी अगर आप एक्सपीरियंस कर सके पूरी एंड तक तो आप जो इमोशन फील करेंगे उस इमोशन के ऊपर कोई आप प्राइस नहीं लगा सकते. सो जहाँ पे भी आप फिल्म देखें, जिन्होंने दुबई जाके देखी, पैसे खर्च करके देखे,
एक्चुअली वो फिल्म देखने के बाद जो इमोशन है उस पे आप मेरे ख्याल है दुबई गए नहीं देखने फिल्म, चलो जा रहे थे जो तो भी देखा। जिन्होंने सिनेमा में जाके देखी, जो किस्मत भी थी एफर्ट उनकी कि की, वो, हाँ, जिसने भी जो जहाँ exactly. दुनिया में देखी गई, आई थिंक आलिया का बड़ा क्रेडिट है कि ये दिस फिल्म जी क्रॉस 200 करोड़ जी बैरियर इंडियन रुपीस बॉक्स ऑफिस पे, एंड आलिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दिस इज द ओनली फीमेल इंडियन एक्टर हुज गॉट 2 films over the 100 crore in the 100 अच्छा, crore club, which are women centric, राइट women driven films. राइट। अब वो एक डिबेट होती है ना, हम ना वो नेपोटिज्म वाली भी, अब बंदा बोले कि आलिया भट्ट जो है वो अच्छी अदाकारा नहीं है, इट इज व्हाट इट इज। इट इज व्हाट इट इज मैन। अब ठीक है महेश भट्ट की बेटी है और Yeah. पूजा भट्ट की बहन है, बट आई मीन इफ द वर्ल्ड डिडंट हैव आलिया भट्ट एज एन एक्टर, आई थिंक द वर्ल्ड would be No, poorer. yeah, I mean that's another debate altogether. But the bottom line is that she's a fantastic No, but I think performer. about these things while watching performances. No, I think I about- don't. Not while watching a film. I do. No. I was thinking about it. I was like, यार कि there's a debate कि अच्छा ठीक है Star Kids ये वो. But plus, I mean, my God, the fact that she comes from like the elite Sure. Bollywood And then she gharana, married into another elite Bollywood gharana. and then she's playing. Look at what she's playing. Yeah. What do you mean? Look at what she's playing. As the character that she's playing, I'm Okay, saying it's the disconnect between her real life and the हाँ, character of and how course. well she's adapted. Well, because she comes from an elite background, तो आपको ख्याल होगा कि वो अपने एक्सेंट नहीं ड्रॉप कर सकेगी। एक्सेंट नहीं ड्रॉप कर हाँ, सकेगी। किया। बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, उसने जो हिंदी जिस तरह से बात की है पूरी गुजरात, वो एक्सेंट वो वाला भी है, खुशी और वो सारा, बट आई मीन अब आप वो देखे ना, वैसे व्हेन यू सी आलिया बट कन्वर्सिंग ड्यूरिंग इंटरव्यूज, I mean, it feels like English is her first language. Yeah. So how important it is for actors to get everything right. And to get into the role, to get into the role. character, absolutely. Acha, while we're talking about nepotism and Star Kids and all of that, there's one actor who had no connections in Bollywood, but he's just completed 30 years of Dar. And Beyond Borders की बात करें तो I must plug in our panel, our BBC Urdu ने एक panel host किया on 30 years of Shah Rukh Khan. And I was on that panel with Yasir Usman, who wrote the biography of Rekha, which I had read, and I was like, Yasir Usman is such a familiar, and then I realized that, man, I've read his books, and of course, BBC ki jo host thi Alia. So it was a really nice discussion. Guys, if you're looking for more Beyond Border content, please go and watch it. It's on YouTube. And we've kind of recapped 30 years of Shah Rukh Khan and our experiences, and they've taken some very cute interviews from people in Pakistan on the roads in which dialogues they remember or which songs they remember. Cute. So it's a really cute little half an hour panel session, so do watch it. Cute. Yeah. ठीक है, तो गंगूबाई नेटफ्लिक्स पे है, बीबीसी उर्दू के यूट्यूब चैनल पे आप आमना का भी शो देख सकते हैं। मूविंग ऑन जी, moving on to first of all Virgin River very जी। quickly. Virgin River is an American series जी। and it has प्रेमिस क्या है? premise ये है कि it's like ये वो वाली आपने हॉलीडे देखी है? नहीं। द हॉलीडे ऑफ कोर्स देखी है हसन। द हॉलीडे क्या? फिल्म नहीं, किसकी है? केट विंसलेट, कैमरॉन डियाज, जैक ब्लैक, जूड लॉ। नहीं देखी। Okay, please watch it. It's one of the most romantic films ever made. And like ये वो वाली फिल्म है जो कि हम हर साल मैं देख सकती हूँ। Okay. Like I watch it at least once a year. Whenever you're feeling a little low or emotionally deprived, you watch The Holiday and you feel good. Virgin River is like a series with that emotion. Okay, it's about this nurse, this midwife / nurse, Mel, who moves to Virgin River, a really small and sleepy town, to get away from the hustle bustle of her life. She's lost her husband. She had a miscarriage, so she's had personal tragedy. She's dealing with that, and she comes to Virgin River to start a new life for a year. And she connects with the hospital and the clinic there. It's a small town with characters that you know everybody, and everybody has a little sidetrack. And then she meets, what's his name? देखो हीरो का नाम ही भूल गया मुझे। जैक। हाँ जैक ही है। जैक ही है जी। Mel meets Jack. Wow. Jack played by Martin Henderson, who was one of the dreamy doctors in Grey's Anatomy. So we saw him there. ओह अच्छा, ओह तो मतलब हम देख चुके थे जैक को पहले। अब ये कि वर्जिन रिवर की दुनिया ऐसी है कि किसी के साथ बहुत बुरा नहीं कुछ होता,
bad things happen, but then there are solutions to them and you know that things are going to come around. हाँ. So आप बहुत डिस्ट्रेस नहीं होते हैं. आपको पता है कि कोई बीमार है तो वो उसको सही हो जाएगा. अगर कोई नहीं भी सही होता तो एक एक्सपेंडेबल कैरेक्टर. I mean, it's a really feel good series. So feel good watching. It's on Netflix. 4th season अभी complete हुआ है. It's been approved for a 5th season. And every season ends on a little mini cliffhanger, which kind of intrigues you कि अच्छा आगे क्या होगा. ठीक है. No, it's a no-brainer. It's really like easy watch. Cute. मुझे थोड़ी सी गर्ली वॉच लग रही है गर्ली वॉच. आपने वो ही नहीं देखी हॉलीडेज में आपको क्या वो भी मुझे गर्ली वॉच ही लग रही है इसलिए मैंने नहीं देखी. How does one sell Virgin River to some? अच्छा मैं आपको फिर Extraordinary Attorney Woo बेचती हूँ. हाँ वो बेचे. हाँ वो आई एम सॉरी लेकिन वर्जिन रिवर आप नहीं बेच सकी. चले मैं आपको वर्जिन रिवर नहीं बेच सकी. Guys, all the girls out there looking for a really clean and really mushy romance. Feel good watching, go watch Virgin River. अच्छा, Extraordinary Attorney Woo जो है, it's Korean drama series है on this 27-year-old attorney who's got the Asperger's syndrome. She's on the spectrum for autism. So obviously she's got an IQ of 164. She's got a memory that is a picture memory, photographic memory. जैसे सूट्स में उसकी होती है छोटे की होती है मगर उसको ऑटिज्म नहीं होती. बट ये जो है ना ऑब्वियसली शी हैज नो इमोशनल कोशेंट. EQ इसका बहुत लो है. सो शी कांट कनेक्ट विद पीपल. शी सोशली ऑकवर्ड, ऑल ऑफ दैट. सो हाउ शी मेक्स इट थ्रू दिस लॉ फर्म एंड हाउ शी विन्स केसेस एंड शी इज ब्रिलियंट एंड एनीबडी हु लाइक्स अ लीगल ड्रामा will get hooked to it. ये बेहतर लग रहा है. हाँ, and she's got this little quirk that she is obsessed by whales. By whales? हाँ, तो वो हर चीज़ में ना whale analogies ढूंढती है and she's got these whale eureka moments and it's so interesting. and मैं सोचती हूँ कि यार ये भी ड्रामा सीरीज ही है ना मगर इसमें कितनी विजुअलाइजेशन क्रिएट करने में कितनी मेहनत हुई भी है कि वो बैठ के एक लॉ फर्म के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी सोच रही है. उसको यूरिका मोमेंट मिलती है और VFX इफेक्ट से बाहर एक हम्पबैक वेल जो है वो फ्लोट कर रही है. इट्स ब्रिलियंट. द परफॉर्मेंसेस आर ब्रिलियंट. द ओनली डाउनसाइड इज इट्स नॉट डब्ड. Oh, तो आप सबटाइटल्स देखिए. You have to read the subtitles and it's Korean, so obviously there's nothing that you connect to with the language. बहुत ही फर्क है ना. मैं बड़ा प्रॉब्लमेटिक फील करता हूँ क्योंकि वो सबटाइटल्स मुझे लगता है जस्टिस नहीं करते. तो आपको ये भी नहीं बेच सकी. नहीं ये इंटरेस्टिंग है. कितने एपिसोड्स कितने सीजन? देखिए इट्स ऑनगोइंग. 2 episodes कम एवरी वीक और मैंने सुना है कि पहला सीजन है तो उसकी 16 एपिसोड्स हैं. अच्छा. तो मैं अभी पहुंची हूँ कुछ 6-7वें तक. अच्छा जी मुझे अंदाजा नहीं है बट एनीबडी हु इज इनटू इट. बहुत हमारे व्यूवर्स में बहुत सारे लोग हैं जो के ड्रामास फॉलो करते हैं, बड़े शौक से देखते हैं. तो बड़े लोग रिलेट करेंगे आपकी इस बात से. तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं काफ़ी चीज़ें ना के ड्रामा में मुझे पाकिस्तानी ड्रामे जैसी भी लगी. मतलब है कि अब तक 6-7 एपिसोड देखी हैं तो 2 दफ़ा खवातीन को थप्पड़ पड़ चुके हैं मर्दों से. बट यू नो ऑब्वियसली. लेकिन कॉन्टेक्स्ट था उनका या एमी? कॉन्टेक्स्ट था लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है कि थप्पड़ पड़ रहे हैं. एमी तो नहीं पड़ गए. नहीं एवी नहीं पड़े लेकिन अच्छा नहीं लगा कि पड़े. ठीक है. हाँ तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे और काफी जोर से पड़े. आमना को अच्छा बिल्कुल नहीं लगा तो के ड्रामे वालों प्लीज आप भी थोड़ा होला हाथ थप्पड़ ना मरवाओ भी लड़कियों को. थप्पड़ ना मरवाओ यार. हाँ. वो भी इतनी खूबसूरत कोरियन प्यारी लड़कियों प्यारी कोरियन लड़कियां. हाँ but very again it's just it's a warm hearted watch. It's really a warm hearted watch. Yeah. तो जो लोग the extraordinary life of Woo, the extraordinary attorney Woo, the extraordinary attorney Woo देख रहे हैं. हाँ. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लग रहा है और आमना ने उसको अच्छे से बेचा या नहीं बेचा. और जो बहुत से लोग ऑलरेडी देख रहे हैं. बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि आपने अपने चैनल का नाम हिस से आही किया आफ्टर वॉचिंग दिस बिकॉज ऑफ योर फॉन्डनेस फॉर फिश वेल्स. ऐसा नहीं है. लेकिन मुझे अच्छा बड़ा लगा. इतना मुझे लगा कि मैंने सोचा कि मैं अपने नए स्टूडियो में मच्छियों का वॉलपेपर लगा लूं. फिर मैंने सोचा आई थॉट अगेंस्ट इट. इंटरेस्टिंग. बट ऐसी चीजें मैं कर सकती हूँ. कर सकती हैं. और वर्जिन रिवर के बारे में भी बताएं अगर आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे आपको कैसा लग रहा है. और फाइनली गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग भी अपना फीडबैक भेजें. आपका फर्स्ट थॉट क्या थी जब आपने वो फिल्म देखी व्हेन यू वॉकड आउट ऑफ द सिनेमा. अगर आपने सिनेमा में देखी या जहाँ नेटफ्लिक्स पे टीवी पे आपने जहाँ पे भी देखी तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था? व्हाट वाज दैट इमोशन यू फेल्ट आफ्टर द मूवी एंडेड? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो.
आमना और कुछ आप मजीद ऐड करना चाहेंगी? जी, आपने कुछ और देखा? मैंने नहीं। अली बाबा 40 शोर के हाँ, अलावा? मैंने अपने YouTube चैनल पे एक नया प्रोग्राम मुझे लगा इंटरेस्टिंग होगा शुरू किया, वीकेंड वॉच के नाम से, जिसमें मुझे लगा कि वो फिल्में जो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ मैं उनके बारे में बात करूंगा। बिल्कुल सही है। इंटरेस्टिंग मुझे लगा, एक हाँ, शायद cute लोगों है। को लगे, हाँ, you know, there's lots of content that I've grown up watching. of course we all have. हाँ, we all have, right? So I thought that it'll be interesting. छोटे छोटे मैं अगर 10-12 मिनट की एक डिस्कशन उन पे करूँ ठीक है तो मैंने किया। पहली मैंने अली बाबा 40 चोर भी, आपने जी। देखी अली बाबा 40 चोर? जी। देखी हुई हाँ, आपने? धर्मेंद्र वाली? उस पे किया आपने? हाँ, आपने कौन सी वाली अच्छा, देखी? मुझे लगा सीरीज पे की जो लगती थी। एक कौन सीरीज सी? भी थी ना अली बाबा 40 शोर की? नहीं, एक अच्छा। अली बाबा 40 चोर की बहुत सारी रेंडिशंस हाँ, हैं, exactly. बहुत फिल्में इंडिया में भी 2-3 बनी, अभी एक अरबाज खान की भी रिसेंटली अपेरेंटली कोई बनी थी। बट जो 1980 में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और जीनत अमान की जो फिल्म आई थी वो यूट्यूब नेटफ्लिक्स पे है, यू शुड वॉच इट। क्यूट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज it was a joint collaboration of between India and Soviet Union. So half the actors are also Russian. Really? हाँ, और वो रशियन में बात कर रहे हैं, उनकी डब हुई है हिंदी में। और जो हिंदी एक्टर जो धर्मेंद्र है वो हिंदी में एक्चुअली बात कर रहे हैं, अगला बंदा रशियन में जवाब दे रहा है और वो रशियन ऑब्वियसली डब हुई है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो या मुझे उस वक्त की सिर्फ कुछ फिल्में याद है, उनमें से रॉकी एक है। रॉकी 1980s में ना, संजय दत्त की पहली फिल्म। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। तो हाँ, वो चेक कीजिएगा मेरे चैनल के ऊपर, हसन चौधरी। आमना का भी चैनल चेकआउट कीजिएगा। आमना ने वीडियो लगाई, आपने कोई? मैंने बिल्कुल FIR में हमने शूट की, हमने FIR शूट की, वो आपको मिलेगी इस हफ्ते देखने को, सैटरडे को बाद। नहीं, सैटरडे तो आज है ना? हाँ, आज लग रहा है तो। नहीं, हम यूजुअली ट्यूसडेज को आती है FIR। अच्छा, मगर इस ट्यूसडे को नहीं आएगी, वेडनेसडे को आएगी। मेरा डेब्यू हुआ है, हसन का डेब्यू है आही पे मेरा डेब्यू हो गया, मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ जी। तो वो क्या वीडियो है वो आमना आपको पता नहीं बताना चाहिए? नहीं, वो सरप्राइज होगा। वो सरप्राइज वीडियो है, वो आएगी। हमने एक को रिव्यू किया है, एक प्रोडक्ट, एक फूड प्रोडक्ट हमने रिव्यू किया है। फूड प्रोडक्ट को रिव्यू किया है, तो फूड क्रिटिक्स भी फूड क्रिटिक्स न्यू जॉब। यस सर। ठीक है, जी गंगूबाई काठियावाड़ी की बात हमने की और मैं मुबारक देना चाहूंगी हसन ने, कोई वहाँ मुस्लिम एलिमेंट नहीं लेके आए आज अपने रिव्यू में ताकि काफी रिप्रेजेंटेशन थी। आप खुश थे आज? अच्छी और अच्छी पॉजिटिव, यू अप्रूव ऑफ द रिप्रेजेंटेशन? पॉजिटिव। ठीक है। फैजी भाई भी उन्होंने एंड में डाले, जो करीम लाला थे उन्होंने भी एक उन्होंने पठान दिखाया नेगेटिव उसमें। हाँ, कोई बात नहीं, आपको हजम हो गया। अब तो इतना तो होना ही था। ठीक है, तो प्लीज ना नाराज होइएगा कमेंट्स में। मैंने क्यों नाराज होना है? लोग क्यों नाराज हो गए थे? लोग तो ऐसे नाराज होते रहते हैं, लोगों का क्या है यार? लोगों का काम, लोग तो किसी बात पे भी नाराज हो जाते हैं। तो मुझे और आमना को अब इजाजत दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा ये जो बियॉन्ड बॉर्डर की ये वाली एपिसोड है ये आप सैटरडे को देख रहे होंगे, और अगर आपने इंशाल्लाह ये सैटरडे को देख लिया है तो कल संडे को हमारी पूरी कोशिश होगी कि मैं और आमना आपके साथ ऑन द स्पॉट की एक और एपिसोड शेयर करें, और उसके बाद 2 दिन का हम ब्रेक लेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ 9-10 मुहर्रम, और उसके बाद मैं और आमना आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे 10 अगस्त वेंसडे को विद हॉट बाइट्स, और उसके बाद फ्राइडे को इंशाल्लाह जो हॉट रिव्यू आएगा उसमें हम मेरे हमसफ़र, मेरे हमनशीन, फ्रॉड, और क्या आता है, बड़ा कुछ, पहचान, इनको हम डिस्कस करेंगे। अज्यूमिंग के शायद संडे को बख्तावर ना आए, मंडे ट्यूसडे के ड्रामे नहीं आएंगे, मंडे ट्यूसडे के क्योंकि वैसे ड्रामे नहीं आएंगे 9-10 मुहर्रम की वजह से, तो इसलिए हमारे पास फ्राइडे को कम ड्रामे होंगे, तो हमने सोचा कि हम एक ही हॉट रिव्यू कर लें फ्राइडे को, इसमें हम वीकेंड के सारे ड्रामे। लोगों के साथ मैं अफसोस करना चाहूंगी कि हब्स शायद ना देख सके, हब्स शायद वो ना देख सके। Probably आपको पता है ना, पहले हम एक ही वीकेंड रिव्यू करते थे, फ्राइडे को ही करते थे। सारे ड्रामे हम एक ही हफ्ते में एक ही मतलब टिका देते थे, करते थे। तो शायद वापस शुरू कर दें। क्यों? वो ज्यादा हो गए हैं। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मैं और आमना आपसे बहुत जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।